पद्धति में, हमारी जो धार्मिक बातों में देखेंगे तो महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और हम लोग जब बच्चे से देखे हैं, चूंकि मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, और वहां कहता था कि जिस घर की महिलाएं चतुर होती हैं वही घर बसता है। पहले से ही रहा है सर, ऐसा नहीं है कि चेंजेस सिचुएशन हो रहा है। तो शुरू से ही महिलाएं आदरणीय होती थी। और मैं देखा हूं, मैं मेरे फादर या मेरे दादाजी कहते थे कि मैथिली में कहते थे कि जकर घर में महिला बढ़िया रही चुकरे घर बसे। तो क्या हुआ है, वो जो विश्वास था लोगों में, हम तो जानकी जी के जगह पर हैं। जानकी जी जब मिथिला की धरती से निकली हैं और वहां से हर समय महिलाओं को पूजनीय स्थान रहा है। लेकिन जो चेंजेस, जो सिचुएशन हो रहा है ना सर, जो चेंजेस हो रहा है एडुकेशन में, चेंज हो रहा है इंपावरमेंट में, चेंजेस हो रहा है इकोनॉमिक इंपावरमेंट में, सारे चीज को चेंज कर रहा है। दूसरा चीज, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी पहले क्या था कि मैरिज सिस्टम अलग था। पहले पहले एजुकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं था। महिलाओं को माना जाता था कि घर का एक डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, या घर में महिलाएं एक पत्नी के रूप में रहेगी। अब महिलाएं जो है वो पत्नी के रूप से बियॉन्ड हो गई है सर। और अभी महिलाएं जो है काफी बढ़िया इन इन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो महिला का सक्सेस रेट जो है वो बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू मेल। चाहे एडुकेशन में बात करें, एडुकेशन के पार्टिसिपेशन में बात करें, इकोनॉमिक इंपावरमेंट में बात करें, पॉलिटिकल चीजें में बात करें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल चीजों को चेंज कर दिया है, पूरे सारे चीज को चेंज कर दिया है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग पावर जो है अब महिलाओं को, पहले क्या होता था परिवार में महिलाओं से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ करता था। अभी जो चेंज सिचुएशन हो रहा है उसमें महिलाओं को एम्पावर किया है। अब फैमिली के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेटिव हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, डिसीजन जो है ये हो रहा है। और आने वाला, मैं तो देखता हूँ सर, विजुलाइज कर रहा हूँ कि आने वाला समय में अगर हम कास्ट स्ट्रक्चर को रिफॉर्म्स करेंगे ड्यू टू ये जो हम इंपावरमेंट ऑफ वुमेन, अगर महिलाएं अगर अभी देख रहे हैं कि महिलाओं जो पढ़ी लिखी हैं, अब अभी नया एक चेंज जा रहा है। लेकिन सिचुएशन दो है सर, दो पैरामीटर, एक रूरल का सिचुएशन अलग है, एक अर्बन का सिचुएशन अलग है। लेकिन मैं बेसिक फोकस कर रहा हूं अर्बन के सिचुएशन में। अब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जॉब ऑल अक्रॉस कर रही हैं, ऑल अक्रॉस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मैरिज सिस्टम भी चेंज हो रहा है, कास्ट सिस्टम भी चेंज हो रहा है। क्योंकि जब महिलाएं अपने कंसेंटेड मैरिज कर रही हैं, ऐसा नहीं कि हमारी बच्ची है, हम बच्ची को कह दे कि तुम फला जगह शादी कर लो तो शादी कर लेगी, ऐसा नहीं है। वो बच्चे कहते हैं कि हमको लाइफ लीड करना है, आई हैव टू लीड माई लाइफ, आई हैव टू थिंक ऑन दैट। और हम लोग के समय में क्या होता था कि हमारे फादर ने कहा कि फलना शादी कर लो, हम लोग शादी करते। वो चेंज सीनरियो हो रहा है, इसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर रूरल की बात करेंगे, रूरल में भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है। सोसाइटी ड्यू टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पंचायतों में इतने बढ़िया रिजर्वेशन हो गया है, एजुकेशन, हम ये पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, लेकिन जब से सरकार ने साइकिल योजना या ये सब लाया है, मेरे घर से 3 किलोमीटर पर मेरा स्कूल था। वहां पर पहले महिलाएं नहीं जाती थी, आज के साइकिल होने के कारण या सरकार ने जो चेंजेस किया है उसके कारण महिलाओं का एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो रहा है। अब हम देख रहे हैं सर, हम कहीं कहीं विजिट करते हैं, देखते हैं कि महिलाओं का संख्या ज्यादा हो रहा है बनिस्पत के लड़कों की संख्या से। इसीलिए आने वाला चीज में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चेंजेस होगा। अगर महिलाएं अगर पार्टिसिपेटिव होंगी, महिलाएं अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो सारा जो जो डॉरी सिस्टम है या क्या कहते हैं इनइक्वालिटी एंड वर्क प्लेस है, सारा चीज चेंज हो जाएगा। कास्ट स्ट्रक्चर भी हो रहा है सर, अब शादियां कंसेंटेड हो रहा है, वहां कास्ट स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्म्स का जमाना है, और सोशल रिफॉर्म्स क्या होता है, स्लो प्रोसेस में होगा। अब मान लीजिए कोई पहले कास्ट स्ट्रक्चर था कि लाला जी में शादी करेंगे, ब्राह्मण में शादी करेंगे, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के साथ शादी करेंगे। अभी तो चेंज हो गया है।
एक मिथिला की लड़की जाके केरला में शादी करती है, केरला की लड़की बेगूसराय के लड़का के साथ कर रही है। तो ये जो इम्पावरमेंट हो रहा है सर, ये चैलेंजेस नहीं है, ये तो हम अच्छा चीज मान रहे हैं कि टोटल रिफॉर्म्स हो रहा है, लेकिन रूरल सोसाइटी में थोड़ा सा अभी हमें इस पर काम करने की जरूरत होगी। अर्बन सोसाइटी में बहुत अच्छा हो रहा है, चेंजेज हो जाएगा अपने आप। जो कास्ट स्ट्रक्चर है ना सर, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, सब चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम नारायण साहब को कहेंगे कि इस पर थोड़ा सा थॉट करेंगे, रूरल इंडिया कैसे हो सकता है। हालांकि सरकार ने पॉलिटिकल जो इम्पावरमेंट किया है यहाँ, खास के पर्टिकुलरली बिहार, हम बिहार कॉन्टेस्ट में बात करें, बिहार में महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिकल हुआ है, 3 टायर सिस्टम में आ गया है। तो इसीलिए पावरमेंट होने से अब महिलाओं को भी अब एमएलए, एमएलसी, वार्ड मेंबर, नगर निगम, सारे जगह एम्पावरमेंट। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने इंडिपेंडेंस और पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन की बात कही, आपने डिसीजन मेकिंग की बात कही। एट द सेम टाइम यू टॉक्ड अबाउट रूरल इंडिया दैट इज इन ए स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट रिलेटिवली। और ये बहुत बड़ी बात है कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट इट इज एट द हार्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस। इसमें अब हम मिस शालिनी सती को इनवाइट करते हैं बोलने के लिए। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर a little, although Professor Narayan knows her well, and all of us know her well, but not as she is today. Because one of the things I would like to tell you that yesterday she was given a very prestigious award of BW Legal Top 40 under 40 lawyers, and we are Okay, very proud of her. congratulations, congratulations. All your And blessings. she is very well known lawyer working at Supreme Court, particularly in the cases of arbitration. And she has been, I'm very thankful to her because she has spared time. Because as I feel when I talk to her, that she has been a very, she has following a very busy schedule, and I thank you for that, and we are grateful to that. But I would like to show another dimension of her personality. She is a tireless advocate for voiceless. The reason for inviting her to this roundtable discussion is that she is a passionate crusader for justice, and she is fearlessly championing the rights of children, women, and the underprivileged. And with unwavering dedication, she fights for dignity, equality, and justice, inspiring hope in the lives of the marginalized. Recognized for her unrelenting advocacy, Ms. Prasad embodies compassion and courage, making a profound impact on the lives of those who need it most. Ms. Prasad, most welcome to the roundtable discussion, and Thank you so much. the floor is yours. Thank you so much uh, for having me here. And I'm so delighted to share this panel with people I have literally grown up with. And I'm very happy today to be addressing this wonderful topic of redefining gender roles. So, as a lawyer, I can address the legal aspects of it, I think, which will also be important for the viewers here. Uh, Law is all pervasive. With whatever we do, howsoever we live, everything is governed by a specific set of laws. But today and in 2026, I think we are viewing law as a tool for social reimagination. And that means that it's not merely a question of access now, but dismantling the entrenched stereotypes that have been existed in our society worldwide and to reinforce the equality standards. Uh,
recently we have seen that there are various legislations to start with, and I understand, Anil Chacha, that you are very interested in English language, and you would see that very carefully the legislature has started using gender neutral terms, which is, I think, one step in the most right direction. So change of language is something that we are seeing happening across the board, a very invited step. Uh, Also, there has been a stark shift in legal thought process. As a partner of a law firm here, I understand that even the leadership pipelines are questioned these days. People watch and see how many women are leading your firm, what is happening. So, in terms of a very commercial setup, also, I see that mind shift happening. We talk about the laws now, and across the board, mostly what we are seeing is a lot of radical changes happening. The triple talaq judgment, the Hindu succession laws being changed recently, which had been going on for decades. Uh, so it's not now about having special safeguards or addressing vulnerable subjects, but actually implementing the same into formal equality, and formal equality to lived equality then is what I would say. Anything specific that you want me to address here, or on laws? On laws, you can Mhm. continue on laws, because that is very Very, important. The legal aspect is very. very important. Yes. So, as I was talking about English language being changed in our draconian laws, there are reduced gender assumptions, very cautious about language. So, it all leads to protecting without profiling. So, be it a male, female, or a third gender, there's no profiling existing mostly in whatever new laws we are seeing now. We see that whatever laws we had, which were quite rooted in those archaic gender assumptions, are now being repealed, now not being adjudged. Even when you go to a court, the court will look at you in terms of an individual agency, will look at your consent to something, will give individualism more privacy than the non-traditional family constructed structures now. And on the labor law front, which I think Dr. Karn was also talking about, we have had a lot of churning around. Now, all the codes have been partially notified and combined, consolidated together. Uh, Unpaid labor is being recognized. There's no gender bias that's created. I think everybody is expected to work on a similar platform in a similar way. So it's not always about reaching an equal place, but also viewing people as equals, which I think law as a tool will really enforce amongst urban, rural, and across all strata of the society. That's very important. And very important factor here now. As women, I believe we really talk about equality honi chahiye society mein, and there have been years and years of when we were ignored and put somewhere in the corner. But you see, there are various laws like the POSH Act. Dr. Karan just talked about it also, Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act. It is not just an act in theory, it's also setting institutional customs in a certain way. So anybody who's working in an institution which employs 10 or more people has to follow the provisions of this act. And it's very important because then you see that people are supposed to educate their people, and it really changes the mind frame of everyone around. I'm also a POSH committee member for various government and individual organizations across the board. And it is great to see, they'll invite you, they'll want you to talk to their employees, even when they're working in a factory or working, sitting in an AC office. So if everybody's being educated with these laws in place and why this law has been brought into effect, I think that really creates a lot of difference across the board, top to bottom. And then I think we also discussed about the family structure and the evolving family structure. So I believe it's totally not viewed in the traditional way now. The Supreme Court also recognizes
live-in couples and their rights and rights of children thereafter. Uh, uh, there has been a major intellectual shift in the laws that we see as they are. With changing gender roles, uh, I think transformation is accelerating for our country. Uh, there's a lot of scope still that we, and a lot of ground to cover still. But the task is not to create special rules, but to make it a more seamless and individual rule for everyone. So this is my view, preliminary view on the topic. You are muted. Uh, Thank you very much for your deliberations, and you talked about the change of language and the legality of the gender roles and transformation. Uh, and I will sum it up later after the third panelist, Dr. Jyotsna Prasad, who is a senior author, and she has been taking part in these kinds of discussions. And I invite her to speak on this subject. Dr. Prasad. सबको प्रणाम, और सबसे बड़ी बात, इस मंच को मैं नमन करूंगी जिसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। मैं शुरू से, चूंकि यहाँ रूढ़ियों की बात हो रही है, तो समय जो है वो परिवर्तनशील है, और ये नहीं कि हमारे पूर्वजों के साथ जो भी है वो ऐसे ही रहा है। मैं शुरू करूंगी वैदिक काल से। तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ही छूट दी गई थी, और गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा, ये सारी महिलाएं जो थी उस समय काफी पढ़ी लिखी हुई थी। गार्गी, अभी हमारे कर्ण साहब ने कहा कि ये मिथिलांचल की बात हो रही थी, तो मैंने ये गार्गी जो थी उन्हें सीता माता की गुरु के रूप में भी देखा जाता है। इन्होंने शादी नहीं की थी, और इन्होंने बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए एक ये गुरुकुल भी बनाया था जिसमें बच्चियां पढ़ती थी, और सीता जी इनकी शिष्या भी थी। तो इन्होंने शादी नहीं करके अपने आप को डिवोट कर दिया था बच्चियों को पढ़ाने में, उन्हें आगे ले जाने में, और इनका पुरुषों के साथ भी शास्त्रार्थ होता था, और ये उसमें इनका बहुत नाम रहा है। और मैत्रेयी तो एक ऋषि की पत्नी भी थी, और वो भी इस मामले में बहुत आगे बढ़ी हुई थी। यहाँ तक कि 12वीं शताब्दी में ये भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती थी, उसने भी मैथमेटिक्स में बहुत कुछ किया था। तो इसका अर्थ ये नहीं कि रूढ़ी जो हमारे पहले हुआ है वो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ की स्त्रियों को ये छूट नहीं थी कि वो पढ़ाई नहीं करे। मैंने जैसा कि गार्गी के बारे में बताया है कि गार्गी ने शादी नहीं की थी, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था बच्चियों को आगे बढ़ाने में, ज्ञान का अर्जन करने में। तो ये जो भी कुछ भी होता है, धीरे धीरे ये ह्रास होता है। ये बीच का जो पीरियड था, मध्य काल जो था, उसमें यहाँ तक कि ये माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि जब से ये खाना बदोश का जीवन खत्म हुआ, तब से पुरुषों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो भी इसलिए कि कृषि पर वो निर्भर करने लगे, और कृषि पर निर्भर करने के लिए उनको खेती की रक्षा करनी थी, उन्हें अपने परिवार को बचाना था, अन्न को बचाना था। इसलिए हिंसक पशुओं से रक्षा कर, अनाज को खेती की रक्षा करनी थी। इन सारी बातों की वजह से पुरुषों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा मध्य युग में। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुस्मृति से ये धीरे धीरे शुरू हुआ है, जहाँ एक और मनुष्य स्मृति में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहीं दूसरी ओर वहां लिखा गया है कि कोई भी स्त्री अकेले नहीं जा सकती है। वो अभी ये कुंवारी है तो वो अपने पिता के संरक्षण में ही रहेगी, जब शादी हो जाएगी तो पति के संरक्षण में रहेगी, और जब बूढ़ी हो जाएगी तो पुत्र के संरक्षण में रहेगी। लेकिन यहीं से ये माना जाता है कि औरतों का धीरे धीरे ह्रास होने लगा, उनके अधिकारों की कटौती होने लगी। और ये केवल भारत की ही बात नहीं, ये यहाँ रोमन साम्राज्य में भी औरतों का बहुत महत्व था।
लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, वहां भी यूरोपियन कंट्री में भी ये धीरे धीरे औरतों की स्थिति बदलती गई, बद से बदतर होती गई। मैं आपको एक बताऊं, आज अमेरिका लोग करते हैं, अमेरिका आज भी सबसे विकसित राष्ट्रों में माना जाता है। उस अमेरिका में वोट डालने के अधिकार, उस आजादी के 144 वर्षों के बाद औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला, वो भी 72 साल के उनके संघर्ष के बाद। तो इस तरह से अमेरिका में है। और यह भी जहां जिसके बारे में हम कहते हैं कि विक्टोरिया के शासन काल में जहां सूर्यास्त होता ही नहीं था, वो विक्टोरिया इतनी रूढ़िवादी थी कि जब तक जिंदा थी औरतों को वोट डालने का अधिकार उसने नहीं दिया। तो ये केवल भारत की बात नहीं, मध्यकाल का जो है वो पूरे विश्व में एक तरह से ह्रास ही हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, औरतों की प्रतिष्ठा के क्षेत्र में। और इस तरह से फिर भारत के साथ तो स्थिति और भी दयनीय हो गई कि यहाँ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिसकी वजह से विधवा के साथ ही उसको सती बना दिया जाता, सती प्रथा का शुरुआत कर दिया गया। और फिर बच्चियों को कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। और इस तरह से यहाँ तक कि आप आज भी देखिएगा कि दक्षिण भारत में दिन में शादी करने की प्रथा है, लेकिन हमारे यहाँ रात में शादी करने की प्रथा भी इसीलिए हुई क्योंकि वो ये जो भी आक्रमणकारी थे, उनके सिपाही, चाहे वो उन लड़कियों को उठा न ले जाए, तो इस वजह से उन्हें बाहर पढ़ने नहीं दिया जाने, विद्यालय में, पाठशाला में उनको जाने नहीं दिया गया। तो इसके वजह से उनकी शिक्षा का स्तर जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और स्त्रियां जो है वो बच्चा देने की मशीन और घर गृहस्थी को देखने वाली एक औरत बनके रह गई। तो उसका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं रहा। और इस तरह केवल ये भारत की बात नहीं है, ये विश्व के कोने कोने में इस तरह की बातें होती रही हैं। और रोमन बाध्यता हम तोड़ने के लिए बात करते हैं। और ये यूरोपियन कंट्री में ये बहुत से ये मी टू आंदोलन चला। सिमोन द बोवार करती है कि कोई भी औरत, द सेकंड सेक्स में वो करती है अपनी किताब में, कि कोई भी स्त्री पैदा नहीं होती, उसको पैदा बना दिया जाता है समाज द्वारा कि तुम ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे उठो। तो बच्चा जो भी जन्म लेता है वो न स्त्री और पुरुष के भेद को समझता है, वो बच्चा रहता है। लेकिन हम समाज वाले उसको लड़की बना देते हैं और इसको इस तरह से चलना है, तुमको जोर से नहीं बोलना है, तुमको तुम्हारी आवाज एकदम कोमल होनी चाहिए, तुम वीरता का काम नहीं करोगी। यहाँ तक कि मर्दानी शब्द पर भी कुछ ये स्त्रीवादियों ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि मर्दानी क्यों, क्या औरतें वीर नहीं हो सकती हैं? झांसी की रानी के लिए हम क्यों कहें कि वो मर्दानी? इसलिए थी कि वो वीरता का काम स्त्रियों का नहीं था और उन्होंने वो काम किया। ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियां वीर नहीं हो सकती और पुरुषों में कोमलता नहीं हो सकता। ये पुरुष, ये हमारे यहाँ का यहाँ तक कि एक फिल्म में डायलॉग है कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। तो ये सब जो ये हमारे समाज में ये बात बैठा दी जाती है कि इस तरह से मर्द को रहना है, पुरुष को रहना है, इस तरह की स्त्री को रहना है। तो स्त्री और पुरुष के अंदर ये समाज को जो है वो बांटता है। हमारे अंदर हर तरह की मनुष्य है, हमारे अंदर करुणा भी है, हमारे अंदर दया भी है, हमारे अंदर ममता भी है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन हमारा समाज उसको ये मान नहीं देता। और इसके वजह से आप देखिएगा कि हार्ट अटैक बहुत पुरुषों को होता है, क्योंकि अब वो अपने मन में सारी बातें अंदर रखते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो कर पाते हैं। अगर वो रोते हैं तो उन लोग कहते हैं लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। तो इस तरह की जब बातें आएंगी तो अंदर मन में आएगा कि मुझे रोना नहीं है, तो अपने वो दर्द को अंदर ही अंदर वो रखते हैं। तो ये इस तरह से बातें होती हैं। तो पुरुष और महिलाओं के अंदर दुविधा, दूरी बढ़ती रहती है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीना है, हमें समता का अधिकार, हम लोग मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं। और ये यहाँ ये जो अधिकार है ये भी
हम स्त्रियां जो मांगती हैं वो मानवाधिकार का ही एक अंग है। हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। हमारे अंदर जितनी दक्षता है, हमारे अंदर जितनी कुशलता है, उसके आधार पर हमें चाहिए। हमें तनख्वाह भी बराबरी का चाहिए। हमें जो भी कुछ करना है तो हमको वो बराबरी का, जिस तरह से हमारे अंदर क्वालिटी है, जो कुछ भी मेरा है, मेरे अंदर है, उसी के अनुसार हमें मिलना चाहिए। हमारी हमारी सरकारें भी कर रही हैं इस तरफ, बहुत कुछ कर रही हैं। और देखिए कि वो औरतों के साथ जो ये अभी जो सरकार की योजना में घर मिल जो रहा है, वो घर मिल रहा है किसी मेल मेंबर के नाम से नहीं, बल्कि घर की जो भी बड़ी औरत है उसके नाम से। तो हमारे यहाँ क्या था कि 2005 से पहले हमारे जो घर में ये था पैतृक संपत्ति, उसमें औरतों को का अधिकार नहीं था। तो अधिकार जब तक आपको वोट डालने का नहीं रहेगा तो सरकार नहीं पूछेगी, और वोट और धन संपत्ति नहीं रहेगा तो ससुराल वाले कहेंगे, गुस्सा हो गए कि तुम चली जाओ अपनी घर। और मायके वाला अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो मायके वाले कहेंगे कि तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम यहाँ क्यों हो। तो जब तक उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन 2005 से ये अधिकार मिला है, तब उनको एक है कि हाँ, इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है, मैं भी अधिकार से वहां जा सकती हूँ, अपना अधिकार मांग सकती हूँ। और पढ़ाई लिखाई के तरफ भी सरकार बराबर का बहुत तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अभी मैंने देखा कि ये द्रोण बहनें, लखपति बहनें और इस तरह की न जाने कितनी बहनें हैं, और ये जो भी पैसा दिया जाता है गृह उद्योग करेगी, छोटे छोटे उद्योग के लिए, और वो औरतें कर रही हैं। तो आर्थिक मजबूती बहुत, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको अगर इज्जत दिलानी है तो उसको आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी है। तो हमारी सरकार भी कर रही है। और जैसा कि कर्ण साहब ने कहा, मैंने भी देखा था, उसे मधुबनी में गई थी कि दूर दराज की लड़कियां साइकिल से स्कूल आ रही हैं। तो एक जो था कि स्कूल में पहले शौचालय नहीं होते थे, उस डर से भी बहुत लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी सर्टेन एज के बाद। लेकिन अब क्या है कि शौचालय भी जरूरी बन गया है, घर में ही नहीं, स्कूल विद्यालय में शौचालय हो गया है। तो ये सारी बातें हैं स्त्रियों को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और तरह तरह की योजनाएं सरकार दे रही है, सारी सुख सुविधाएं दे रही हैं कि स्त्रियां बढ़े। अब हम समाज वालों का भी काम है कि हम घर के सदस्यों का काम है कि हम बालिकाओं का मनोबल बढ़ाएं। और हमारे बच्चे, जब कल्पना चावला चांद पर जा सकती है तो हमारी बेटियां क्यों नहीं जा सकती। वो भी तो हमारे बीच की ही बेटी थी। तो इस तरह की अगर भावना अपनी बच्चियों में भरा जाए तो जरूर परिवर्तन आएगा, जरूर सब कुछ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित जानकारी देने के लिए, और बहुत सी नई बातें आप बताई। और आई फील वेरी ऑनर्ड, एंड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज ए मॉडरेटर टू से something about it, and to talk about this subject that is very important in 21st century, because we are at the crossroad where we have inherited assumptions, as all our three respected panelists talked about, and also the stereotype of gender is being challenged, is being interrogated, and it is more importantly reimagined. Why stereotype matter? It is matter because the expectations we had, who will be educated in the past, we used to think who will be educated, girls, boys, who will lead and who will follow, who is superior and who is inferior, who will speak and who will remain silent. So in these categories, the binaries, we have historical facts, and the historical facts are that the gender roles were sustained by patriarchy, पितृसत्तात्मक से
जो ज्योत्सना जी ने बताया और जो शालिनी ने बताया और कंठ साहब ने भी बताया कि उससे गाइडेड होते थे। रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशंस, colonial structure influenced gender roles, economic dependency, disparity also structured gender roles. So we have in history resistance is there, as Kant Sahab said, Jyotsna said, and Shalini said, and we have examples of Savitri Bai Phule who challenged educational exclusion, and we have writers like Mahashweta Devi who exposed gendered oppression through literature. Shalini talked about literature. And global thinkers, Jyotsna ji talked about Simon de Beauvoir, who says that uh, one is not born but rather become a woman. So what happens in the 21st century? How the stereotypes have been broken, how the gender roles have been redefined. Let us have a look at it. I think we have time to discuss it. And today, uh, the gender is not just destiny, it is a choice. So here, when we have choice, we 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 call it stereotypes because we restrict human potential. When we deal with stereotypes, we restrict human potential. We try to encroach upon the dignity of the human beings. And that's why we have to come out of these binaries of men and women and dominant, dominating, submissive. And we have scientists, lawgivers, teachers, nurses, and there is a shift. Now, this shift is from destiny to choice. Now, women have choice to go ahead. And this human capability, we have to remember that human capability is not gendered, as Jyotsna ji has explained. So, one of the important points is education. Education is freedom. It is the primary site of change, and it gives economic independence. So, primary instrument for a powerful society is education. In classroom, that is the place where we teach uh, both boys and girls critical thinking, gender inclusiveness, and celebrating the diverse role of people, because the roles are not restricted to one gender. Now, here, uh, there are challenges, as Shalini said, at the workplace. The challenges are, Jyotsna ji also talked about the salary gap and gendered career choices, that this choice is important for female and this is important for male, and the compared care work. The women are infamously less paid traditionally, because they perform lot of job but they are paid little. On the other hand, men were enjoying their privilege. So one of the question is about masculinity, as Jyotsna ji talked about the language that was concerned with the gender, the particular gender. Now, so the battle of genders is about collective emancipation. It is not only the emancipation of women, also of men, their thinking, their outlook, their mindset. So, what is this new masculinity? Empathy over dominance. That is very important. That partnership over control, responsibility over entitlement. And when men change, society will change. Now, what is the change taking place in the digital age? We should also reconsider that
Digital age has enabled lot of activism. There are feminists, they are LGBTQ plus, they are all active, and this is given by the digital age, and it is also they get disseminated very fast on social media. Now, the negative aspects of this is trolling, harassment. If a woman says something, lot of people start trolling her. This is the negative aspect of technology, and it must be guided by ethical literacy and accountability. Now, there is one thing I would like to introduce in this, that is a term introduced by Kimberly Crenshaw in 1989, that is intersectionality, because gender is not isolated. It is concerned with, uh, as Shalini said, it is something that is related to law and race, and it is concerned with race, ethnicity, class, and it cannot be understood in isolation. If we are talking about gender, caste will come, as uh, uh, Karn Sahab talked about. Class will come, religion will come, region will come, and other factors like Dalit, Adivasi, transgender, migrant workers, they all will be included. So there would be layers and layers of understanding to make them inclusive and socially grounded. So here, as Shalini said, law, rights, citizenship, they are all included, and legal reforms in the 21st century, Shalini has put it very uh, uh, brilliantly, about sexual harassment, about domestic violence, about transgender rights, and this reflects a shift from moral judgment to right-based citizenship. The social attitudes must be alongside legal framework. So here, literature and culture, as Shalini said, they are also instruments of change. So now, if we look at the literature of today, we see that myths and stories are being rewritten, and the marginalized voices are being heard. So now, let us, instead of romanticizing it, let us look at uh, redefining humanity. It is not about erasing differences. It is about ensuring that differences does not become differences do not become a disadvantage. So here, a truly modern society is where gender does not restrict dignity, identity does not restrict dignity, and humanity comes before hierarchy. That is very important. So, an educated society must think of humanity first instead of hierarchy. So, what we have to do as educators, as policymakers, and citizens, we have to be clear about building a society in which will be a world where gender expands the possibilities rather than restrict it. So, in redefining gender, we redefine humanity itself, and that is very important. And I think today's roundtable discussion, comes to the conclusion that in redefining gender, we redefine humanity itself, and that is what I had to contribute in this subject. Now, I request Professor Narayan to uh, conclude the session and thank all the participants, the panelists. Sir. Sir. Thank you very much, Professor Prasad. I'm very happy
to see all of you. And currently, we are working. We means the Society for Empowerment is working in Gaya districts to empower the women of rural Gaya, and we have submitted one report and preparing for another report. Here we are giving training to women and all that. I wish that you can come and see what how the Society for Empowerment is working for the development of the women in particular and of general society and in general of society of this district. So uh, now the question, our uh, trend is that we ask for questions from the audience if there is any. Audience, please, if you have any questions from any one of us or even otherwise, you are free to raise. Sir, we have not received any questions from any So audience. there is no So question we can today. continue. So, Yeah. okay, then we are thankful to the media, all print and electronic media, and the participants and those who are our viewers. And we are very much thankful to them that they participated in this program. And we hope in near future also we will have such a meaningful uh, program. We will have such seminar or the action research program. And you all are invited to participate or to suggest our activities in our activities that which area we should take up. We have some small short-term courses that also we run, like Jain Buddhism, in which we give training to how to keep mind cool and how to have the mental approach with coolness towards the social problems or that which is a part of the lessons which in both Gaya, the Buddhist monks are given such training, which were given by Buddha himself. So that is the one aspect. The other aspect is that we are trying to have a small means 2 weeks program on the development of the women, in which we have holistic approach for the development of women, and our courses are recognized by the state governments. So our certificates, the certificates are given by the Society for Empowerment, sometime also provides employment to the younger generations. These are the activities, and your suggestions are most welcome. We may add some more courses or some more activities prescribed by you all. So we are very much open to that. So thank you very much. It was a good seminar today, and we are thankful to all of you, and hope in future also we will be getting your support. And thank you all. Thank you Thank you, very sir. much. Thank you. Thank you for inviting me as Thank a you. panel. Thank you. Thank you, We will sir. be Thank No, you, no, you sir. are already Yes. part